Now in this particular video, we will discuss about solution, an important property termed as colligative property. So here we are going to discuss today colligative properties. So what do we mean by colligative properties and which are they? So colligative properties are the properties of solution which depends on the number of moles of solute. The properties of a solution that depends on the number of moles. So the properties that depends on the number of moles of solute and not on the nature are termed as colligative property. तो वो properties जो सिर्फ number of moles पर depend करती है, nature पे depend नहीं करती, that's called as colligative property. And there are four types of colligative properties. Four types of colligative properties are there. The first one is relative lowering of vapor pressure, RLVP, relative lowering of vapor pressure. The second one is elevation of boiling point. Third one is depression of freezing point. And the fourth colligative property is osmotic pressure. So colligative properties are of four types, and these are that property which depends on the number of moles of solute, and these are independent of the nature of the solute, but they depend on the number of moles. Such properties are called as colligative properties. We have four types of colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure, and we shall discuss them in detail. So the first property we are going to discuss is the relative lowering of vapor pressure. What do we mean by relative lowering of vapor pressure? So the first property is relative lowering of vapor pressure. So when you are having a non-volatile solute, so we have a non-volatile solute B. B is a non-volatile solute. So whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent A, now what do we get? We get a solution. So it is seen that the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of the volatile solvent. ठीक है? So let XB be the mole fraction of B and XA be the mole fraction of A. Similarly, let the pressure of the pure solvent be P naught A, and in the solution the pressure be PA. Let the solution's pressure be P total, that is the pressure of the solution, or you can also write PS, the vapor pressure of the solution. ठीक है? Now what happens is, whenever a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution is lesser than that of the pure solvent. ठीक है? तो प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था उससे भी कम हो जाएगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर. ठीक है? It is lesser than the vapor pressure of the pure component P naught A. So what is the vapor pressure of the solution? Vapor pressure depends on PA, and the vapor pressure of solution is equal to P naught A into XA. यही तो होगा. ठीक है? So PA, or I write PS, that is P naught A into XA according to Raoult's law also. And the vapor pressure of the component A is the vapor pressure of the solution. तो ये क्लियर है कि solution का vapor pressure pure component से कम है. Now when I take PA upon P naught A, I get XA. Now from this is equation 1.
So what are we going to do? We are going to subtract 1 from either sides. तो इक्वेशन 1 को 1 में सब्ट्रैक्ट करो. Subtract equation 1 from 1. So 1 minus PA upon P naught A, and this becomes 1 minus XA. दोनों तरफ को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो. So what do you get? P naught A minus PA upon P naught A, which is, since I know XA plus XB is equal to 1, I know this. So 1 minus XA is equal to the mole fraction of B. And this term is called lowering of vapor pressure. ये प्योर कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर था और ये A का वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन का प्रेशर A नॉट से कंपैरिजन में कम होगा. सो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और किसके रिस्पेक्ट में लोअर हो रहा है? P नॉट A, ओरिजिनल कॉम्पोनेंट के रिस्पेक्ट में. प्योर स्टेट में ओरिजिनल A कितना था? सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. So relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the non-volatile solute. So the relative lowering of vapor pressure P naught A minus P upon P naught A is relative lowering of vapor pressure, and that is equal to the number of moles of non-volatile component. So this is relative lowering of vapor pressure. Now to further extend this, we got the equation. Now what equation we have? We have P naught A minus PA upon P naught A, which is equal to XB. Now if you know the lowering of vapor pressure, now let P naught A minus PA be delta P, which is called as lowering of vapor pressure. So I can also write delta P upon P naught A is equal to XB. And what is XB? So from this relative lowering of vapor pressure, we can also find out the molecular mass of the solute. So XB is equal to number of moles of B upon number of moles of solute and solvent. Now we can also write delta P upon P naught A is equal to number of mole is equal to given mass upon molecular mass of B. Similarly, NA would be WA upon molecular mass of A, and this is WB upon molecular mass of B. Now we know that the number of moles of B is very less as compared to that of the solvent, so we can neglect this. We can tell that Na plus Nb will be nearly equal to Nb itself. So what do we get is, we get delta P upon P naught A as WB upon MMB upon WA upon MMA. So delta P naught upon PA is equal to WB upon into molecular mass of A upon WA into molecular mass of B. So what is molecular mass of solute? MMB is WB into MMA upon WA, and here you have delta P naught upon P naught of A, or WB into molecular mass of A into P naught A upon WA into delta P naught is the molecular mass of the solute. So if you know the relative lowering of vapor pressure, ये term अगर हमें पता है, solute का mass, solvent का mass और molecular mass of solvent पता है, तो solute का भी molecular mass हम find out कर सकते हैं. So this is the first colligative property called as relative lowering of vapor pressure. So whenever we have salt or sugar added to water, the vapor pressure of that solution decreases. As a result, the vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure depends or is equal to the mole fraction of the non-volatile component, which is B. So this is relative lowering of vapor pressure. Now the second colligative property that we are going to discuss is the elevation in boiling point. So that's the second colligative property, elevation in boiling point. ठीक है. Now when you are having, तो पहले तो boiling point देखते हैं.
What is a boiling point? It's the temperature at which the vapor pressure of the liquid get equal to its atmospheric pressure. जिस टेम्परेचर पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग point. So it's a temperature at which the vapor pressure becomes, the vapor pressure of the liquid specifically gets equal to the vapor pressure of the atmosphere. Then it's called as a boiling point. That temperature is called as boiling point. Now we all know, I have taken a solvent which is water, and water has a boiling point. The pure water has a boiling point 100 degrees Celsius, and that pure component's boiling point, the boiling point of pure component is TB naught, boiling point. So temperature of the pure liquid, TB boiling point of the pure liquid is 100 degree for water, in case of water. So this is the boiling point of pure liquid, ठीक है, in the pure state. Now to this solvent, when you add a solute, when a non volatile solute is added to the solvent, when a non-volatile solute is added to solvent, the vapor pressure decreases. Therefore, the boiling point of the solution will increase, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है. तो whenever sucrose, salt or sugar or urea, that is a non-volatile component, is added to a solvent, the vapor pressure of the pure solvent decreases. तो वेपर प्रेशर क्या होने लगता है? कम होने लगता है. As a result, the boiling point will increase. So I hope this is clear. So whenever the boiling point you are talking about, it's the temperature at which the vapor pressure of the liquid gets equal to atmospheric pressure, and when a non-volatile component is added, so the boiling point will increase. Now you have a pure solvent whose boiling point is TB naught, and the solution has a boiling point. When you add a non-volatile solute, the boiling point of the solution, let that be TB. So we all know solution का boiling point solvent के respect में क्या हुआ है? Increase हुआ है. Let delta B TB be the elevation in boiling point. टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. सो दैट इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर. तो कितने से बढ़ा? दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट. सो एलिवेशन in boiling point is delta TB, which is equal to the boiling point of the solution minus the boiling point of the solvent in its pure state. So this is elevation in boiling point. Now graphically also we can plot a graph between the temperature term and vapor pressure. Now I am making a graph for the solvent and then for the solution. This is a graph for the pure solvent, and then you add non-volatile solute to the solvent, you get a solution. Let us assume that this point is the vapor pressure, or you can tell this is the atmospheric pressure. Atmosphere का pressure ये point है. इस point पे solvent का क्या temperature है और इस point पे solution का क्या temperature है, that we are going to find. सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट TB नॉट, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज TB. तो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, तो ये क्या है? डेल्टा TB. दिस मच इज द एलिवेशन फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. इतने से इंक्रीज हो रहा है. सो दिस टर्म इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, विच इज डेल्टा TB. That is the boiling point of solution minus the boiling point of the pure solvent. And mathematically, experimentally, it is proved that the elevation in boiling point is proportional to the molality of the solution.
एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो डेल्टा टीबी है it is directly proportional to the molar concentration, that means molarity of the solution. Now this is proportional. We can make it equal by using a proportionality constant called Kb. Kb is called molar elevation constant. Kb is called as molar elevation constant. It is also referred as boiling point elevation constant or ebullioscopic constant. It is molar elevation constant or ebullioscopic constant, the letter Kb. So the boiling point of a solution when a non-volatile solute is added is much greater than that of the pure component, and delta Tb is equal to Tb minus Tb naught. Also delta Tb is equal to Kb into m. Right? Now how to define Kb? Kb is the elevation and boiling point when the concentration of the solution is 1 molar at 1 m. When molarity is 1 m, then ebullioscopic constant is the elevation of boiling point. So ebullioscopic constant is defined as the elevation in boiling point when 1 mole of a liquid or 1 mole of a non-volatile solute is added to 1000 gram of solvent. So it's the molarity when it is 1 molar, the elevation in boiling point is equal to ebullioscopic constant, or ebullioscopic constant is equal to elevation in boiling point when molarity of the solution is unity. Is this clear? So what would be the unit? If I need to find the unit of Kb, what would be the unit of Kb? Kb is elevation in boiling point, can be either in degree Celsius, molar or Kelvin molar, and you all know molarity is degree Celsius upon mole per kg, or you can write Kelvin upon mole per kg, which can also be written as degree Celsius, kilogram per mole, and this can be written as Kelvin kilogram per mole, that is degree Celsius, kg mole to the power minus 1, Kelvin kilogram mole to the power minus 1. This is the change. So either you write degree Celsius or Kelvin, it remains the same. So this is the unit of Kb, Kelvin kilogram per mole. In terms of SI unit, if you talk about, it's Kelvin kilogram per mole. Now ebullioscopic constant we got. So elevation and boiling point is Kb into molarity, or you can write if Wb is the mass of solute. अब mass से पहले number of moles पे लिख देते हैं. Molarity is the number of moles of solute upon mass of solvent in kg. If it is in gram, you need to convert into kilogram by multiplying it by 1000. So you have now Kb, number of moles of solute is given mass of solute upon molecular mass of solute into the mass of solvent, here into 1000. ये 1000 इसलिए क्योंकि ये W है ग्राम में था, ये ग्राम में था, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगाया गया है. So delta Tb could also be expressed like this, or from here you can find the molecular mass of solute, that is MMB is Kb Wb into 1000 upon delta Tb into the mass of solvent. So this is important equation, numerical comes directly for these kind of questions. So the molecular mass you can calculate directly of solute on this formula, ebullioscopic constant into the mass of solute. Wb represents the mass of solute. MMB, the molar mass of solute. Wa, the mass of solvent. So these are the terms that you need to know when you are finding the molecular mass of solute. So if you know the elevation in boiling point,
you can find the molecular mass of solute as well. So this is the second colligative property, elevation in boiling point. Now the third colligative property we are going to discuss now is depression in freezing point. That's the third colligative property. Depression in freezing point. So now what do we mean by freezing point? Freezing point is the temperature. What is freezing point? It is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the vapor pressure in the solid. The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure in the solid phase is called as freezing point. So when you add a non-volatile solute to a solvent, सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या होगा वेपर प्रेशर पे, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन टू द फ्रीजिंग पॉइंट. सो द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज, विल लोअर डाउन. अगर कोई चीज फ्रीज हो रही थी 2 डिग्री पे, अब वो और कम वाले टेम्परेचर पे फ्रीज होगी क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है. सो व्हेनेवर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, the vapor pressure, the depression of the freezing point gets lowered down, get reduced, and that's the depression in freezing point. So when you are talking about the depression in freezing point, we shall make a graph and again understand this. Here you have the temperature, here is the vapor pressure. ठीक है? So this is a graph. Here the solvent was in liquid state. Here the solution is in liquid state. Now at this point it starts to freeze. So this is the freezing point of the solvent. ठीक है? और ये यहाँ पे freeze हो रहा है. So this is the freezing point of the solution. ये solid phase है, ये वाली लाइन सॉलिड फेज है. तो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे सॉलिड फ्रीज हो रहा है. सो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज TF0, राइट. एंड हियर दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन TF. तो क्लियर है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है. So this difference in the temperature is delta TF, called as depression in freezing point. So delta TF is called as the depression in freezing point, and delta TF is equal to the freezing point of solvent minus the freezing point of solution, which is equal to TF0 minus TF, that is delta TF. So the depression in freezing point of a solution is equal to the freezing point of the pure component minus the freezing point of the solution. That will give you the depression in freezing point. So when a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point gets lowered. And this is what we get, delta TF is TF0 minus TF. ठीक है? Experimentally यहाँ पर भी find out हुआ था कि delta TF, that is depression in freezing point, is proportional to the molarity of solution. Or you can tell delta TF is a constant Kf into molarity, and this constant is called depression constant, molar depression constant, or also referred to as cryoscopic constant. इसको और क्या कहते हैं? Cryoscopic constant. And this Kf is equal to delta TF upon m. That is the depression in freezing point, or called as cryoscopic constant, is defined as the depression in freezing point when the molarity of the solution is 1. When m is 1, Kf is equal to delta Tf. So the depression constant
is equal to the depression in freezing point when the solution is 1 molar. ठीक है. Now as we have done for the elevation and freezing boiling point, similarly you can write delta TF is KF into M. मोलालिटी क्या होती है? Number of moles of solute upon mass of solvent. If it is in gram, you will convert into kilogram by multiplying by 1000. Now how to get the number of moles of solute? Given mass upon molecular mass. Here you have the mass of solvent. This is in gram, so to convert into kilogram you write 1000 over here. So delta TF is KFWB 1000 upon MMB into WA. ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ डेल्टा TB था और ये KB था. फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा TF है और ये KF है, क्योंकि मोलालिटी तो सेम है एंड दिस टर्म रिप्रेजेंट्स मोलालिटी. और यू कैन राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज KF into WB into 1000 upon delta TF into WA. So the equations are important to be used and understood, and the unit of KF is again delta TF upon M, which is Kelvin kilogram mole to the power -1 or degree Celsius kilogram mole to the power -1. So KF और KB दोनों की यूनिट एक ही है. सिंस इतना सा डिफरेंस है, KF फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, एंड KB इज बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नाउ द फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर. Now before coming to fourth colligative property, the application of this property, that is depression in freezing point, we normally see in cold areas where there is lot of snow falling down, the roads get covered with snow. So you would have heard and seen that salts are sprinkled on the road and it gets melted down and the road becomes clear, क्योंकि तब वो water liquid में convert हो चुका है. Snow भी water ही होता है but वो freezed form में है. When you add salt NaCl, what will happen? NaCl is non-volatile and you are adding to snow, which is the form of H2 itself. So what will happen? Freezing point और lower हो जाएगा, तो वो liquid में convert हो जाता है, वो melt हो जाता है, क्योंकि अब वो उस temperature पे freeze नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर non-volatile salt add हो चुका गया है. So normally salt are sprinkled for clearing the roads that are covered with snow, and that's the application of depression in freezing point. ठीक है. Now the next colligative property which we are going to study is about osmotic pressure. Now to come to osmotic pressure, first we have to understand the process called osmosis. तो osmotic pressure समझने के लिए osmosis जानेंगे. Now to understand osmosis, we take two containers. So you have two containers. In one container you have solution, solute solvent दोनों प्रेजेंट है. ठीक है. बड़े छोटे पार्टिकल यानी कि solute solvent दोनों प्रेजेंट है, और एक तरफ सिर्फ solvent के पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो छोटे छोटे साइज के. So you have two containers and these two containers are connected by semi-permeable membrane. This be connected by a semi-permeable membrane. This is a filter. This membrane act as a filter. It's highly microporous. ये किस तरह का है? Microporous है, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पे बहुत छोटे छोटे से होल्स है, जिसमें से उतने छोटे पार्टिकल्स ही इससे पास हो सकते हैं और बड़े पार्टिकल पास नहीं हो सकते. एंड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी ईदर ऑफ वेजिटेबल स्किन, जो वेजिटेबल के ऊपर जो स्किन्स होती है, पील्स होते हैं, दीज आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एनिमल्स के हो सकते हैं. ठीक है. सेल्यूलोज ऑल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. So you are having natural semi-permeable and synthetic semi-permeable membrane. So you have the semi-permeable membrane connecting the two containers. One has only solvent and the other has solution. ठीक है. यहाँ पे solvent का amount ज़्यादा है, high concentration of solvent. ठीक है. और यहाँ पे solvent का concentration कैसा है? लो concentration of solvent.
So when you are having solution and solvent connected together by a semi-permeable membrane, then the solvent particle move from high concentration of the solvent to the low concentration. यहाँ से travel कौन होकर आ रहा है? Solvent के particle right container से left container में आ जाते हैं automatically by their own, and this process of motion of the solvent from high concentration of the solvent to the less concentration of the solvent through a semi-permeable membrane is called as osmosis. अब ये high concentration solvent के रिस्पेक्ट में था, solution के रिस्पेक्ट में कहूँ तो ये तो solution है ही नहीं, तो ये dilute हुआ और ये concentrated हुआ. तो solution के रिस्पेक्ट में this is a dilute solution, only solvent particles you are having more. So it's the movement of the solvent from dilute solution to the concentrated solution. Solution के respect में और solvent के respect में अगर हम बात करें, it's the movement of solvent from high concentration of the solvent to the low concentration of the solvent. And this movement of the particle with the help of semi-permeable membrane is called as osmosis. ठीक है, ये प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं. अपने आप मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन, और आई विल टेल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव बाय देमसेल्फ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस. डन. नाउ टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस ऑन द सॉल्यूशन वी अप्लाई अ प्रेशर. हम यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्यूशन वाले साइड पे ताकि ये सॉल्वेंट इसके अंदर एंटर ना करे. सो वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन सो दैट द सॉल्वेंट डज नॉट एंटर इन दिस particular container, and the pressure exerted on the solution so that osmosis does not take place is called as osmotic pressure, and osmotic pressure is denoted by the letter pi. So osmotic pressure is the pressure exerted on the liquid on the solution so that the solvent does not come into the container from low dilute solution to concentrated through a semi-permeable membrane, and that pressure is called as osmotic pressure. Is this clear? Now I hope the osmotic pressure is clear with us. Now this osmotic pressure is denoted by the letter pi, and this osmotic pressure is experimentally found to be equal to concentration into gas constant into temperature, and this concentration is expressed in terms of molarity R gas constant, temperature T. Concentration is number of moles upon volume of solution in liter RT. Number of moles is given mass upon molecular mass. This is volume of solution which has to be in liter R into T. So the osmotic pressure pi is equal to WB upon MMB RT upon V, where R is gas constant, ठीक है, T temperature है, Kelvin में होगा. So you can get the molecular mass. And from this, the molecular mass of solute is equal to WB RT upon pi V. And this equation is importantly used to find the molecular mass of solutes like proteins, polymers and other macromolecules. तो macromolecules के लिए हम molecular mass osmotic pressure से निकालते हैं, क्योंकि osmotic pressure से molecular mass हम accurately measure कर सकते हैं for dilute solution. Dilute solution यानी कि बहुत कम अमाउंट में है, तो तब भी हम उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम करेक्टली निकाल सकते हैं, एक्यूरेटली निकाल सकते हैं. और ये एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, मोलारिटी में हम एक्सप्रेस करें कंसंट्रेशन को. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास. सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम निकालते हैं, लेकिन पॉलीमर और जो हमारे प्रोटीन्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके लिए मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेटली इसी मेथड से निकाला जाता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बहुत एक्यूरेटली निकलेगा. और पॉलीमर्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट्स लाइक पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स. नाउ when we have two solutions whose osmotic pressure are equal, I have solution 1 and solution 2, both have same osmotic pressure.
दो सोल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है क्या, सेम है, तो क्या होगा, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. Such solution having same osmotic pressure, such solutions are called as isotonic solution. So isotonic solutions are solution whose osmotic pressures are equal. So also you can write that is C1 RT, C2 RT, RT RT cancel out हो जाएगा. So concentration of such solution will also be equal. So the solution which have same osmotic pressure are called as isotonic solution. Fine. One more, few terms more related. This osmotic pressure, if you need to understand the process of osmosis also, I'll use a term called as hypertonic and hypotonic solution. Isotonic तो पढ़ ही लिया, अब hypertonic और hypotonic solution भी discuss करेंगे. For this, I will consider an example. We have blood cells, red blood cells. So, normal saline, जो normal saline होता है, normal saline जो solution है, salt solution है, that contains 0.9% of NaCl, normal saline. ठीक है? अगर मैंने एक ऐसा solution तैयार किया, उसको hypertonic कहूँगी, अगर उसकी concentration, so a hypertonic saline will have NaCl greater than 0.9% in it, and hypertonic solution. And hypotonic में अगर hypotonic saline बनाना है तो उसमें NaCl 0.9 से भी कम होगा. तो अगर एक normal saline है उसमें exactly 0.9% NaCl है. अगर किसी सोल्यूशन में 0.9 से ज़्यादा हो रहा है तो वो हाइपरटोनिक सलाइन बना, और अगर वहाँ पर कम है NaCl का कंसंट्रेशन 0.9 से तो वो होगा हाइपोटोनिक. नाउ नॉर्मल RBC इफ यू प्लेस इट इन नॉर्मल सलाइन, ये नॉर्मल सलाइन है, इफ यू टेक नॉर्मल सलाइन एंड प्लेस RBC इट विल रिमेन एज सच. जो RBC रेड ब्लड सेल है उनका आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो नन ऑफ द पार्टिकल मूव इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड. मतलब फ्लूइड जो अंदर था, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो अंदर ही रहता है, बाहर से कोई अंदर कंपोनेंट नहीं जा रहा, अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा. सो इट रिमेन्स एज सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था, नो osmosis is taking place. ठीक है? But when you are having a container, you have placed this RBC. ठीक है? यहाँ का concentration कम है बाहर का, तो आपने कौन सा solution लिया है? It's an hypotonic solution. Hypotonic solution ले रखा है, RBC रख रखा है. RBC के अंदर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ से अंदर जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो RBC है आफ्टर सम टाइम इट विल स्वेल अप एंड दिस इज कॉल्ड एज हेमोलोसिस. Hemolysis is the swelling of the RBC when it is placed in a hypotonic solution because the solvent particles are moving from low concentration to high concentration. Solvent के particle बाहर से RBC के अंदर जा रहे हैं क्योंकि RBC के अंदर फ्लूइड ज़्यादा था तो वो वहाँ ट्रैवल करते हैं और स्वेल हो जाता है RBC, और इस बीमारी को कहते हैं हेमोलोसिस. Now if you take a hypertonic solution, अब हमने hypertonic में RBC को रखा है, ठीक है, तो बाहर कंसंट्रेशन कैसा है, ज्यादा, और RBC के अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, कम. तो अब यहां से फ्लूइड बाहर आएगा, सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम RBC टू द सॉल्यूशन, यानी कि अब RBC कैसा हो जाएगा, इट विल श्रिंक एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस. It's the shrinking of the cell when you place it in a hypertonic solution.
दोनों ही डिसएडवांटेज है. सो व्हेनेवर वी आर इंजेक्टिंग अ सलाइन, the saline that is being injected should be a normal saline, not hyper nor hypotonic. नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे, अदरवाइज आरबीसी या तो स्वेल हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी. सो टू अवॉइड दिस ऑस्मोसिस इट इज सेफ टू इंजेक्ट नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन थ्रू आर वेन्स. वेन्स के थ्रू जब हम इंसर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन सॉल्ट का कम हो जाता है, तो हम यही यूज़ करते हैं. सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस. अनदर एप्लीकेशन इज व्हेन यू आर हैविंग raw mango and you spray or sprinkle salt solution, the raw mango shrinks, सिकुड़ जाते हैं क्योंकि NaCl जो आपने solution sprinkle किया है that is hypertonic, so shrinking will take place. Similarly, if you take an egg and place it in normal water, it remains as such. When you add salt to it, it will shrink. ठीक है. और नॉर्मल वाटर में आप देखोगे हल्का सा वो स्वेल हो जाता है. इवन रेसेंस, किशमिश होती है, इसको पानी में डालो, वे भिगो जाती है, इट स्वेल्स अप. So why is it? Because it is undergoing osmosis. The cover, the outer part of the resin act as a semi-permeable membrane. So these are the general application. Even आप अगर flowers पे water sprinkle करते हो जो थोड़े से मुरझा से गए थे, वो खिल जाते हैं osmosis की वजह से. और जो हमारे vegetables होते हैं उस पर भी आप देखते हैं कि water sprinkle करते रहते हैं, osmosis होगा तो वो fresh रहेंगे, उनकी texture maintain रहता है. So these are the basic applications of osmosis. एंड वेन यू आर सफरिंग फ्रॉम एडिमा, एडिमा में क्या होता है, हमारे लेग्स वगैरह स्वेल हो जाते हैं, फेस स्वेल हो जाता है. इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है. और अगर हम और सॉल्ट खाते हैं फूड के थ्रू, सो व्हाट हैपेंस इज आवर आरबीसी स्टार्ट्स टू स्वेल अप. वी आर मेकिंग द सोल्यूशन हाइपोटोनिक, सो स्वेल हो जाता है आरबीसी और बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं और उस स्टेट को एडिमा कहते हैं. ठीक है. एंड एट टाइम्स व्हेन यू आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, वी आर सेड टू हैव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. Because if you take more amount of salt, then the RBC will collapse. That is why it is always said that a person suffering from high blood pressure should take less salt content. So these are the general applications of osmosis and osmotic pressure.